What do I say? सुप्रीम कोर्ट इस वक्त फुल एक्शन में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर देखें तो सरकार की नकेल कसने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बड़ा सवाल यह है कि अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये नेता थर थर कांपने लगे हैं। अचानक से सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच ने ऐसी और कौन से फैसले सुना दिए हैं, तो आपको बताने जा रहे हैं कैसे इस देश के कई सौ नेता जिन पर आपराधिक मामले हैं अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बीजेपी के कई सौ विधायक खड़े खड़े धराशायी हो जाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजनीति के अपराधीकरण पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति संसद या विधानसभा में कैसे वापस आ सकते हैं। इस पर विचार करते हुए कोर्ट ने दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। ये मामला कैसे और किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये भी आपको समझने की बेहद जरूरत है। ये तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तमाम आपराधिक मुकदमे खत्म कराए जब वो मुख्यमंत्री बने। वहीं पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आपराधिक मुकदमों को झेल चुके हैं। खैर, आगे बताते हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े जो बताएंगे कि कितने सांसदों पर है आपराधिक मामले। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि आधी संसद। इनमें से 170 सांसदों पर ऐसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। रिपोर्ट में केरल, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में सबसे अधिक आपराधिक मामलों का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, ये सुनिए। कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब एक सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराए जाने पर जीवन भर के लिए सेवा से बाहर कर दिया जाता है तो दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है। कोर्ट ने कहा, कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं। वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लगभग 5000 आपराधिक मामले लंबित हैं। इनमें से सबसे अधिक 1171 मामले उत्तर प्रदेश में हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालत के गठन का निर्देश दे दिया है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया, क्या कहते हैं नेता? इस फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ दलों ने इसे लोकतंत्र में नैतिकता और पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया, जबकि अन्य ने चिंता व्यक्त की कि ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते दुरुपयोग का शिकार हो सकता है। जनता की राय, क्या सोचती है आम जनता? आम जनता ने इस फैसले का स्वागत किया। लोगों का मानना है कि इससे राजनीति में स्वच्छता आएगी और केवल ईमानदार और निष्कलंक छवि वाले नेता ही चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी चिंता जताई है कि राजनीतिक विरोधियों द्वारा झूठे मामलों के जरिए इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यदि दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगता है तो राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन में अधिक सावधानी बरतनी होगी। इससे राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता बढ़ेगी, जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है। What do I say? As a colleague who I've known last 6 years, Justice Rishikesh Roy, shared the collegium with him. I know his intellect. I know his sense of balance. Mr. Sibal said he was a complete judge. No, he was a complete man. His sense of humor to make things easy, his balanced approach, whether it's the court or otherwise, was extraordinary. That apart, his patience, his demeanor, his calmness has an impact on all of us when we interact with him. When you feel that you're talking to a person who has knowledge and wisdom. As a judge, there's 3-4 words I can phrase him in. It will be legal acumen, knowledge, reasonableness, and practicality, all built into one person, which is very difficult to get. Somebody said he's like Buddha, but he is disciplined. It requires a lot of
magnanimity and balance and sense of justice to be able to do this. Coupled with the sense of compassion he had, and which got reflected in his judgments dealing with issues of human, when you're dealing with human beings. That apart, he's an all-round. Be it sports, be it music, be it books, and whatnot. I think it's very difficult to find a person like him be on the bench, because invariably most of us get drawn towards more black and white work rather than other things. So he's maintained that balance. Personally, I've had occasions when we share a dinner or something, and our conversations were always very widespread. And I also came to know about his interest in stories about partition. And he borrowed some books and went through and came back to me and we gave his thoughts about it. He's a remarkable person. We'll all miss him on as far as the bench is concerned, but he's bound to be here. He's bound to be in our hearts. His memories will linger on for a long time, almost with all of us. We're present here in huge numbers, and I can tell you, people on the bench will also remember him for a long time. Thank you for being part of us. This is Roy. My brothers. I would also like to say a few words. I met Justice Roy long ago at the National Judicial Academy in Bhopal. I was a rookie judge then, and he was 2 years senior to me. But he was then, as he is now, grounded, good-natured, and completely without airs. He immediately wrote an affectionate letter to me back at Hyderabad. I received the letter. He added me to his mailing list, the Atman magazine, which he had brought out in Guwahati High Court. I would regularly receive it every month. He has been a dear friend to me through the years, though we did not really keep in touch once he moved on. He went on to Kerala. Today, as he lays down his judicial hat, I would like to tell you about some of the other hats that he has worn and he still wears that you may not be aware of. He was a Delhi public school student and he was a champion hockey player and a footballer. He represented his school in major events in both the sports. And on one occasion, when Delhi Public School beat Modern School in a football match, he was solely responsible for it. And the school declared a holiday on that occasion. And I'm told that all the dipsites, as the DPS students call themselves, they all remember that. The people of that era still remember him for that great event and the celebration that followed. Then today, now he is an avid golfer, as some of you may know. And I'm sure he'll become a champion at that sport also, now that he'll have a lot more time to spend on the golf course. He is a voracious reader and he generously gifts books to all the guests who visit him at home. दोस्तों, ये था हमारा आज का विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।